फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द डेफिनेशन। कहाँ से आया, क्यों आया, किस लिए है। A is a positive real number and that should be other than 1. 1 नहीं होना। And x is a rational number such that a raised to power x is equal to n. Then we use a logarithm of a n to the base a is x and we can write it like this way जैसे दे रखा है आप। So therefore when you write down a raised to power x is equal to n, तो इसे लॉगरिथम में लेके जाना हो तो log to the base a n equal to x। Log to the base 2 32 is equal to 5। Log to the base 10,000 equal to 3। 3 raised to power 4 log to the base 3 81 is equal to 4। Anything raised to power 0 is 1, that is why log to the base log of 1 is always written as 0। This is a process how we can shift the exponential to the logarithm। And अगर हम इसे opposite करें तो 2 power, so what is it? What is a? कितना बताया आपने? A is equal to 1 upon 2। यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप आंसर करेंगे। फर्स्ट का आंसर 2, सेकंड, थर्ड, यस जी 4 ही आ रहा है। थर्ड का कितना बताया और फोर्थ का -5। Find the value of x in each of the following. Next,
For the first one, 2 raised to power 3 is equal to x. So x is equal to 8. For the second one, 9 raised to power 2.5 is equal to x. And what does 2.5 mean? Kitna? 5 upon 2. 9 raised to power 5 upon 2 equal to x. 9 is 3 square into 5 upon 2 is equal to x. Whereas x is equal to 3 raised to power 5 is 243. 243. For the third one, log to the base 81x is equal to 3 upon 2. So therefore 81 raised to power 3 upon 2 is equal to x. 81 is 9 square multiplied with 3 upon 2 is equal to x, and the 9 cube is 729. And for the part fourth one, so log to the base root 2 x is equal to 4. So therefore root 2 raised to power 4 is equal to x. Root means raised to power half. So therefore x is equal to 2 square is equal to 4. Clear? The next one, if log 10 to the y is equal to x, then you have to find out the value of 10 raised to power 2x in terms of y. And the answer, y square. 10 raised to power x is equal to y. So you have to find out the value of 10 raised to power 2x, which is 10 raised to power x whole raised to power 2. 10 raised to power x is y. So your resultant is y square. The next one, sorry, how much? So therefore 10 raised to power a is equal to x, and you have to find out the value. So therefore this is written as when the bases are same, powers are subtracted, and the value of 10 raised to power a is x, which is x upon 10. Next, so we convert it, so this will become 3 raised to power x equal to y, and 2 raised to power x is equal to z. So when you are going to solve the 72, use the help of a factorization. So therefore 72 raised to power x is 2 cube into 3 square 4 raised to power x, which is 2 raised to power 3x into 3 raised to power 2x, which can be written as 2 raised to power x whole cube and 3 raised to power x whole square. The value of a 2 raised to power x is z, and the value of a 3 raised to power x is y.
For the next one, try yourself. The answer is this one. Okay. So we start with the fundamental laws of a logarithm. Write down the answer. The fundamental laws of a logarithm. First law, in short, we also say it as a first law ही बोलते हैं. Some pronounce it in a common language called a product law. By the way, this is not any genuine name. ये कोई genuine naming नहीं है. It is log to the base a mn. Then it can be written as log of m plus log of n. Clear? क्यों ऐसे लिखते हैं? उसका रिजल्टेंट है कि हम इन दोनों को सपोज कर लेंगे. Log to the base am, which is in your right hand side, is equal to x. Log to the base an is equal to y. So when we convert them, this will become a raised to power x is equal to m, and a raised to power y is equal to n. So now look at your left hand side. He says m n. Mn means a raised to power x into a raised to power y, which is bases are same, powers are added. So recently you know how we convert the exponential to the logarithm. So a goes to the base, mn to this side is equal to x plus y. So therefore log to the base a mn, and the value of x is, we already supposed it, plus the value of y is log to the base root, right? इस लॉ में स्पेशलिटी ये है कि ये जनरलाइज भी होता है. हम बोलते हैं जनरलाइजेशन ऑफ अ लॉ. जनरलाइजेशन का मतलब है कि अगर आप इसे कंटिन्यू रखें विद मोर देन फ्यू नंबर्स लाइक लॉग ए एम एन पी क्यू, so it goes on continuously to the sum log of base em n plus log of base p plus log of base q, so on. Second law, by name it is a second law. कुछ इसे डिविजिबल लॉ या डिफरेंशिएशन से इम्प्रेस होकर इसे कोशेंट लॉ बोलने की कोशिश करते हैं. लॉग बेस टू द ए m upon n. If it is in a division, the resultant is shifted to the subtraction. क्यों आया? इसका रीजन क्या है? Again, we suppose the term in our right hand side, and again we shift to the a raised to power x is equal to m, a raised to power y is equal to n. So go to your left hand side. In left hand side, m upon n. The value of m is, and the value of n. When the bases are same, powers are is equal to m upon n. And now we shift to the logarithm. A goes to the base is equal to, so therefore log to the base a m upon n is equal to
log of x and the value of y is equal to log of m minus log of n is your second log. Now we move on to the third one, कुछ इसे पावर लॉ, एक्सपोनेंशियल लॉ इस तरह की नेमिंग देते हैं. लॉग m power n and this power n goes to the multiplication. तो इसी ही रहेगा. अगेन सेम मेथड, वही सपोजिशन. एक ही वेरिएबल है तो मैंने एक को ही सपोज किया. And we can convert it, it will become a raised to power x is equal to m, right? Now if raised to power क्यों किया? Because of your left hand side. Here है? हाँ जी. Okay. So therefore the logarithm log, यहाँ let me complete one step, a raised to power nx m raised to power n. Now to the logarithm, a goes to the base m raised to power n this side is equal to nx n, and what is x? Root. This is your third law. मेरे मैथमेटिक्स में यही तक लॉज काम करते हैं. अब आगे चलेंगे जो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री वाले बहुत खुले दिल से यूज करते हैं. फोर्थ लॉ सेज लॉग ऑफ वन, और कंडीशन ये है कि बेस कुछ भी हो, एनी बेस, लॉग ऑफ वन जीरो ही रहेगा. थ्योरेटिकली नहीं जाते हुए मैं एग्जांपल के साथ कर देता हूँ. आप कोई भी वैल्यू चूज कर लीजिए. 2 raised to power 0 is 1, 9 raised to power 0 is also equal to 1, 37 raised to power 0 is also equal to 1. So when you shift it to the log, so it hardly matter आपका बेस क्या है. बेस 9, बेस 37, ये वैल्यू इधर आएगी और ये 1 log of 1. दैट इज वाई आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री में बड़ा रेंडमली बोल दिया जाता है कि log of 1 को आप जीरो लिख लीजिए. उसका रीजन ये है. फिफ्थ, जिसे अभी के लिए प्लस टू वाले एक्सेस में यूज करते हैं, बेस और वैल्यू सेम हो तो ऑलवेज आंसर 1 रहेगा. ये हम प्लस टू के मैथमेटिक्स में से एक्सेस में यूज करते हैं. रिजल्टेंट में फिर से ध्यान रखेंगे, एनी सेम बेस, ये हमेशा ही ऐसा रहेगा. कंसेप्चुअली ना जाते हुए एक एग्जांपल के साथ करें तो आप ये जानते हैं कि 2 रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू 2, 9 raised to power 1 is equal to 9, 13 raised to power 1 is equal to 13. So log 2 goes to the base, 2 to this side, base और ये value same, your answer is 1. Log 9 goes to the base, 9 और सामने 1. Log 13 goes to the base and 13 is equal to 1. तभी बार बार कैलकुलस में आप अक्सर बोलते हैं बेस और वैल्यू सेम है तो रिजल्टेंट को
ऑलवेज 1 पुट कर दीजिए। कंप्लीट। फिलहाल इसे ये कह के बदनाम किया होगा कंपटीशन में आता है, लेकिन कई बार ये आपको +2 के कैलकुलस में जरूर दिखाई देता है। लिख सकते हो AM। बेस आप कुछ भी लगा दीजिए। इस कंसेप्ट के साथ बड़ी कंफ्यूजन है, इसे मैं थोड़ा सा और जनरली लिख के देता हूँ आपको। इन शॉर्ट आप ऐसे समझिए, लॉग टू द बेस NM। आपको इसे लॉग ऑफ M अपॉन लॉग ऑफ N। बेस जहाँ पे AB दिया हुआ है, वॉट एवर यू वांट, जो आपका दिल करता है वो आप बेस दे दीजिए, आपके दिल में कोई फर्क नहीं आएगा। क्लियर है? कोई फर्क नहीं आएगा जी। क्यों? क्यों का जवाब अभी देते हैं। लेट, so the value of a raised to power x equal to m। आप log ले लीजिए और आपका जो बेस करे वो, है ना, मैं लिख देता हूं आपकी मर्जी से कुछ भी, टेकिंग बेस एज अ सोल्यूशन को ही ले लेते हैं b। बेस को हम b लेके चलते हैं, विद रिस्पेक्ट टू बेस इसे लिख लेते हैं। तो ये लिखा गया log टू द बेस b, log टू द बेस b। अब ठीक है जी, हाँ या ना। अब आए हम थर्ड लॉ के ऊपर, व्हेन द पावर गोज टू द मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ एक्स? ये आ गई एक्स की वैल्यू। क्लियर है जी, हाँ या ना। एंड शिफ्ट टू द डिनोमिनेटर। लॉग एम अपॉन लॉग ए, दोनों में बेस बी है। अब इसे आप टेक्निक में समझें, ये बहुत जगह पे ऐसे लिखा हुआ मिलता है और ये सबसे ज्यादा डाउट में पुट ऑफ करके आ जाता है जी वापस। अब जब आप ये कह रहे हैं कि बेस तो कुछ भी रख सकते हैं हम, तो मान लीजिए मैं आपके साथ डिस्कशन में लेके आ रहा हूँ लॉग टू द बेस AM। माई राइट? हाँ जी। नाउ दिस इज रिटन एज log ऑफ M अपॉन log ऑफ A। डिस्कस किया आपने, बेस कुछ भी रख लें, हाँ जी कुछ भी रख लीजिए, रख सकते हैं। ऑफ कोर्स हमने लेफ्ट में प्रूव कर दिया, कुछ भी रख के प्रूव कर लिया। अगर कुछ भी रखने की बारी है, सो दिस टाइम वी चूज M एज अ बेस। बट वी नो log टू द बेस A, और A सेम हो तो आंसर 1। तो दिस इज 1। एम आई राइट? और देखिए इसे लिखा कैसे जाएगा, log टू द बेस AM इंटू log टू द बेस MA, क्रॉस मल्टीप्लाई होने पे AMMA। और ये आपने क्या बताया? ये बड़ा ट्रिकी सा, आपको कहीं जेई मेन और एंट्रेंस की किताब में सीधा ही लिख देता है, और अक्सर इसे लेके बच्चे आते हैं ये कैसे हुआ, कहाँ से हुआ। ये इसका रीजन 1 लिखने का जो फ्रीक्वेंटली किताबों में लिखा जाता है, वो ये रीजन है।
This is called the seventh law. A and base A, then it will become a one. अगर प्लस टू वालों को याद हो तो डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर में हम इसे बार बार यूज कर रहे होते हैं। याद है कि बेस और ये सेम हो जाए तो वन होता है। पहले लिख लो इसे ए। हाँ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर डिफरेंशियल इक्वेशन प्लस टू में ये अक्सर आता है, ई रेज टू पावर लॉग ऑफ बेस ई, और हम सीधा क्या देते हैं, एक्स वन है कि दिस इज अ लॉ। वो तो चलिए, क्योंकि हम मैथमेटिक्स में हैं तो हम एक ही चीज को बार बार लिख रहे होते हैं, तो आपको याद हो गया होगा कि ये क्यों आ रहा है। बाय द वे इसका लॉजिक आज ढूंढ लेते हैं। वही लॉग टू द बेस ए एन को अगर हम एक्स सपोज कर लेते हैं, तो हमारा लॉगरिथम का स्टाइल कहता है कि ए रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू एन। अब एक्स की वैल्यू इसमें हम रख देते हैं, तो क्या आएगी जी एक्स की वैल्यू? हाँ, ये रख दी। तो सामने पहले ही क्या था, एन। एक्स की वैल्यू रखी है जी सिर्फ में। अक्सर जब आप इसे देखेंगे मैथमेटिक्स में, मैं बता देता हूँ ये कहाँ पे होता है, ई लॉग बेस फाइव लिख रखा होगा, और मैथमेटिक्स वाला बेस नहीं लिखता। तो हमारे मैथमेटिक्स में हर जगह पे बेस ई ही होता है बिना बोले, और सामने आंसर सीधा लिख दिया जाता है। इफ दिस विल बी अ सेम हियर, समझिए, यस दिस इज योर सेवंथ लॉ। इसे देखना हो तो बहुत सारे तरीके हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल स्क्रीन पे फ्लैश कर देता हूँ। द फर्स्ट वन, क्या आप इसे बताएंगे कि क्या बनेगा? टू, थर्ड लॉ लगा ली, बेस एंड ये सेम, फाइव क्यूब 125। एम आई राइट? ओके, तो फिर मुझे इसके बारे में बताएंगे कितना आंसर है। दिस गोज टू द पावर। अब ये दोनों सेम होंगे, एंड द लास्ट एट्थ लॉ, पी एंड क्यू में मल्टीप्लिकेशन एंड लॉग टू द बेस ए एन आपके पास आ जाएगा। तो your left hand side log to the base a cube n raised to power p is equal to x, and log to the base a n is equal to y, दोनों सपोज कर लिए। क्लियर है? सो a रेज टू पावर, याद होगा जी अब, इज इक्वल टू, यहां तक। एम आई राइट? ओके।
जो राइट हैंड साइड पे है उसकी पावर को p कर दिया जाए अगर, तो n रेज टू पावर p कितना हो गया? ए की पावर, ए की पावर, राइट, देन a रेज टू पावर qx इज इक्वल टू, a रेज टू पावर qx इज इक्वल टू n की पावर p, दिखाई दे रहा है, n पावर p यहां से लेके आइए, a रेज टू पावर q रेज टू पावर x इज इक्वल टू, एम आई राइट? कितना बन गया जी अब आपके पास? a रेज टू पावर qx is equal to a raised to power, when the bases are same, so therefore the value of x is, and the value of x is, and what is y, and what is x? यहीं से तो क्वेश्चन स्टार्ट कर, यही तो स्टार्टिंग किया आपने क्वेश्चन, इज इक्वल टू, आपको इसकी डेरिवेशन की गहराई में इतना जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सबकी कर रहे थे, तो मैंने इसे भी स्क्रीन के ऊपर बात कर दी। सम यूजफुल रिजल्ट्स, अगर आप लॉ का ग्राफ या वो वैल्यू कैसे मूव करती है उसे समझना चाहते हैं, एंड अगर कंडीशन अपोजिट करती है तो, टच नहीं करता है, वो एसिम्प्टोट है उसके लिए, उसके साथ चलेगा लेकिन उसे कभी छुएगा नहीं। अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, एंड वी कैन चूज 2 रेज टू पावर, लेट मी सपोज a इज इक्वल टू 2, तो अगर आप 2 रेज टू पावर 0 भी करेंगे तो 1 करेंगे, हाँ या ना? तो log टू द बेस 2 1 इज इक्वल टू, अब कंडीशन आती है कि x किसके बीच में रखा जाए। अब इसके बाद x को रखना शुरू करिए। अगर x की वैल्यू आप रखते हैं हाफ, तो 2 रेज टू पावर हाफ इज इक्वल टू 1। द पॉइंट फर्स्ट, द वैल्यू ऑफ x इज बिटवीन, मैंने इक्वल वाली वैल्यू दी, equal to 0. Is it clear? Between 0 and 1, if we have to suppose, so let's suppose we half. So 2 raised to power half is equal to 1. So log to the base 2, 1 is equal to, तभी तो उसने कहा कि a की वैल्यू ग्रेटर देन 1, a की वैल्यू ग्रेटर देन 1, और x की वैल्यू जो है वो, सॉरी, एक मिनट, वैल्यू लेने में गलती हो रही है, रुको रुको।
फ्रैक्शन में लेनी पड़ेगी। रुक जाओ, फिर से लॉग टेबल आने दीजिए, वहां पे लेके दिखाते हैं वैल्यू, क्योंकि जनरल लेने में बड़ा टाइम लगेगा। आप इसे एक बार लिख लो। आगे दिए एग्जाम्पल, सब आ गया। ए ग्रेटर देन जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो और वन के बीच में, तो आपका जो रिजल्टेंट आएगा वो लेस देन जीरो आएगा, नेगेटिव आएगा। बट फिलहाल ये फाइनली जो है वो हमारा कंसिडर रहेगा जब लॉगरिथम टेबल देखेंगे। चलें आगे। यस। 12 is a product of a 3 and a 4. So therefore, log of 12 is can be written as 3 into 4. The first law says that log of m into n is log of m plus log of n. The second one, 50, is 25 कितने का, टू द 50। So 50 is written as, आप इसे बहुत ब्रीफ करेंगे तो 5 into 5 into 2 भी आ जाएगा, विच इज लॉग ऑफ 5 square into 2। पहले फर्स्ट लॉ जो कहता है लॉग ऑफ 5 square प्लस लॉग ऑफ 2, और यहाँ हमारा थर्ड लॉ देन द पावर गोज टू द मल्टीप्लिकेशन। सिमिलरली फॉर द थर्ड वन, दिस इज लॉग ऑफ from your LHS, log of 1 plus 2 plus 3, finally it is log of 6. Now from your right hand side, it says log of 1 plus log of 2 plus log of 3 is equal to log of 1 into 2 into 3 is also log of 6. Clearly? थोड़ी सी बेसिक जानकारी भी हम लॉगरिथम के बारे में रखते हैं कि कितनी तरह का लॉगरिथम जो है वो यूज किया जाता है। एक तो जो आप यूज करते हैं कॉमन लॉगरिथम जिसे हम बोलते हैं, ये आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री में ज्यादा यूज होता है। मैथमेटिक्स जो कैलकुलस है वो इससे दूर है। कॉमन लॉगरिथम कहता है कि इन दिस सिस्टम वी कैन टेक ऑलवेज द बेस एज अ 10। इस सिस्टम में हम बेस को हमेशा 10 मानते हैं, और इस सिस्टम को बाय द वे जिस नाम से हम जानते हैं, वो जिन्होंने इसमें सपोर्ट की है सिस्टम बनाने में, भाई साहब जो हमारे साइंटिस्ट हैं, ब्रिग्स सिस्टम बोलते हैं हम इसे। ये हमेशा हेल्पफुल रहती है आपकी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। और अगर ये मान के चल रहे हैं कि अगर नो बेस इज मेंशन, तो आप हमेशा जो बेस है उसे वो सदा ही आप 10 मानकर चलेंगे। जो अगर आपको कभी भी कोई बेस नहीं दिया हुआ है तो, ठीक है जी। और जब कभी कहा जाए तो आप उसे बेस 10 के खाते में लगा के चल सकते हैं। अब आते हैं हम दूसरे लॉ की तरफ, जिसे हम बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम। ये हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, और इस नेचुरल लॉगरिथम में हम एल ओ जी ना लिख के बहुत बार जो है इसको बाकी सबसे डिस्टिंग्विश कर देते हैं, ऐसे लिख देते हैं सिंपल LN5। ये तरीका है इसे लिखने का, बताने का कि हमने नेचुरल लॉगरिथम को यूज किया है। इस सिस्टम में आपको जब भी कभी हो या बिना बताए, आप हमेशा अपनी बेस जो है वो
सदा ही ई रखेंगे। हाँ, ई क्या है? ई एक इरेशनल नंबर है जो 2 और 3 के बीच में आता है सदा ही। हालांकि ई के बारे में आप दोनों ही बैचेस डिस्कस कर चुके हैं। ये एक एक्सपोनेंशियल सीरीज है जिसे पढ़ा जाता है जहां से आता है। 2 और 7 के बीच में तो हम बोलते ही है, लेकिन अगर हम इसे बहुत करेक्ट करते हुए भी लेके आए तो द वैल्यू ऑफ ई इज बेसिकली 2.7। एक्यूरेट तो कभी नहीं है। और इसे, और बाय द वे ये भी क्लियर है कि ई इज डिफाइंड एज अ इरेशनल नंबर। ये एक इरेशनल नंबर है, इसकी वैल्यू चेक कर ली होगी 2.7, तो फ्रैक्शन में आएगी। बाय द वे इस चैप्टर में, या मैं आपको अभी क्वेश्चंस दे रहा हूँ, वो सारे के सारा जो चैप्टर है वो फिलहाल अभी डिस्कशन में लॉग टू द बेस 10 के साथ आपके साथ डिस्कस हो रहा है। और वो चैप्टर ट्राई क्या क्या आंसर्स आते हैं निकाल लीजिए। log 2 और 1 अलग है, जी पता है कैसे? जब भी 1 लिखा होगा तो उसे log ऑफ 10 बोलेंगे। और वो ऐसा इसलिए बोलेंगे क्योंकि हमने अभी डिसाइड किया कि बेस 10 है। तो 10 raised to power 1 इज इक्वल टू, सो log 10 गोज टू द बेस 10 टू दिस साइड, इसलिए 1। अब इसी कंसेप्ट को आगे देखिए जिसे यहाँ लिखा हुआ नहीं मिलेगा। 10 स्क्वायर लिखूंगा तो कितना होगा? 100, है ना? तो जब भी log 2 द बेस 10 सामने आया 100, और जब ओनली 2 लिख रखा होगा तो वो होगा 100, क्योंकि 10 बेस तो हम बोल नहीं रहे। अब 10 का क्यूब 1000, तो क्या बनेगा? 3। बिल्कुल जी, log 2 द बेस 10 1000। तो जब भी यहाँ 1000 आए तो उसे 3 लिखिए, अलोन 1 आए तो उसे log 10 लिख के डिपिक्ट करिए और शो करिए जी। करिए स्टार्ट। ओके, फर्स्ट इज log 20, सेकेंड log of 2, and the third one log of 800, the fourth one log 2x cube, the fifth one is, कितना बताया आपने? हाँ जी, फिफ्थ log 8, बिल्कुल। सिक्स्थ log 27, सेवंथ log 3/8, and eighth log 5/2। डन। यस समरी, लिखने मत लगना जी, कुछ क्वेश्चन मैं आपको भेज रहा हूँ, ये आप घर से ट्राई करेंगे। इसकी पीडीएफ फॉरवर्ड कर दूंगा। और शो दैट है, इसलिए आंसर पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। शो दैट
and show that and ओके, इसे सॉल्व कर दीजिए मेरे लिए। नेक्स्ट मैं आपको पीडीएफ में भेज दे रहा हूँ। यस, द आंसर्स आर फॉर द थर्ड वन log 5 cube 1 square log टू द बेस 2 फाइनली सॉल्व करके भी विद 2 आ जाता है, इसलिए 1 है। ओके, अमरीन डन। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप होमवर्क से करेंगे। एज अ पीडीएफ भेज दूंगा। आंसर फॉर द फर्स्ट वन इज 100, फॉर द सेकंड वन 3/2, and for the third one it is 2. Similarly, the another one in your homework, answer for the first is 10, for the second one it is 6, and for the third one it is 3/2. Yes, यहाँ से start करिए फिर। When the things are in a proportion, hmm, प्रोपोर्शनैलिटी को ब्रेक करने के लिए हम इसे बोलते हैं के मेथड। समटाइम्स वी यूज लैम्डा आल्सो प्रोपोर्शनैलिटी के लिए। So y minus z, log of y, z minus x, and log of z, x minus y, we put it equal to another constant that is called a lambda. So therefore log of x is equal to lambda times y minus z, whereas log of y is equal to lambda times
z minus x, where log of z is equal to lambda times x minus y. अब आते हैं क्वेश्चन पे। He says prove that x raised to power x, हाँ इसे कैसे स्टार्ट करेंगे? देखिए x रेज टू पावर x कब आएगा? हम्म x से मल्टीप्लाई कर दें, y रेज टू पावर y मल्टीप्लाई विद y and z raised to power z. So this will become log of y raised to power y and z raised to power z मल्टीप्लिकेशन में कब आएंगे? Right, when you add all of them. So log of plus log of y raised to power y plus log of the right hand side. So therefore the first one था product law के accordingly log m into n into, इसे सॉल्व करिए, ये वन आता है, हर चीज कैंसिल हो जाएगी। अभी हमने डिस्कस किया था विद दैट वी आर यूजिंग अ नेचुरल लॉगरिथम, सो देयरफॉर द बेस इज 10, so according to this 10 raised to power 0 is equal to, and something raised to power 0 is 1. ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं जिन्हें आप पूछते हैं या आपके एंट्रेंस में आपके पास आते हैं। नहीं, मैं इसे प्रूव में दे देता हूँ। हाँ, इक्वल टू में पूछेगा क्या है? वन मोर। ओके, सो नेक्स्ट करें। द टर्म इन द ब्रैकेट इज योर जीपी सीरीज। अगर आपने इस पे फोकस किया हो तो इट इज एंड योर जीपी सीरीज, और वो अप टू इंफिनिटी तक की डिस्कशन कर रहा है। अगर आपने ध्यान दिया तो 1/3, 1/3 स्क्वायर, 1/3 क्यूब, so on up to infinity. So this is an GP series whose first term is 1/3 and the common ratio is also 1/3. Sum up to infinity is a upon 1 minus r. So therefore a and 1 minus r, which is 1/3. So it is 1/2. It is 1/2. So 0.16 log to the base 2.5 1/2। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी, राइट। तो हम इसी पे डिस्कशन कर लेते हैं, बहुत हौच पौच हो जाएगा। 2.5 and 1/, okay, so 2.5 is basically 5/2 and this is 2 raised to power -1. Am I right? ये याद होगा जो लॉ में मैंने कहा था बेस कुछ भी आप रख सकते हैं,
और क्या करेंगे फिर इसमें? क्या दे दे? सोच लीजिए। लॉ के लॉज आप लगाने हैं। आप जैसे मैं दे रही लॉ, वो क्या कहते हैं, 2.5 को लिखा मैंने। फिर से लॉ लगाना पड़ेगा, और मुसीबत। कितनी बार लॉ लगाएंगे? इतने लॉ कैसे मैनेज करोगे? और वो राइट हैंड साइड है नहीं आपके पास, मेक इट क्लियर। वो मैंने रखी हुई है, राइट है नहीं आपके पास। देखिए एक लॉ तो, ये आपको बोल रहा है ना कि ये एक लॉ तो ये भी है आपके पास, ये लगाना है। ओके, तो लॉग ऑफ 2 raised to power -1 एंड लॉग ऑफ 5/2। इसमें तो लॉग जाएगा नहीं और आंसर आने नहीं देगा, यहाँ कहाँ से लॉग? अच्छा, आप इसकी वैल्यू निकालने को बता रहे हैं कि अगर मैं 5/2 2 raised to power -1 कोई वैल्यू रख लूँ, तो आप ये कह रहे हैं कि 5/2 raised to power x = 1/2। पर इसमें तो हम आस पास भी नहीं आते। ओके जी, बेसिकली मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे जो 0.16 है वो 0.4 का स्क्वायर है, राइट। एंड जो हमने 2.5 को हमने 5/2 रखा था, अगर हम इसे 2/5 रख दें तो ये 0.4 है। चले आ गया? इन दैट सेंस दिस इज 0.4 का स्क्वायर। एम आई राइट? दिस इज लॉग ऑफ 2 raised to power -1 एंड इसे हमने रखा था 5/2। अब हम इसे लिखते हैं 2/5 की पावर -1। ओके, 0.4 स्क्वेयर log of 2 raised to power -1 एंड 0.4 की पावर -1। सो log of 2 raised to power -1 0.4 की पावर -1, ये -1 कैंसिल होके ये आएगा 0.42। इज इट क्लियर? आप लोग ये कैंसिल कैसे हो रही है? ऐसे लिख लेना जी एक बार, और इसे वापस ले आना घुमा के। हाँ, मतलब आप ऐसे लिखिए, लॉग ऑफ 2/5 की पावर भी माइनस माइनस बाहर ले आओ तो मल्टीप्लाई में हो गया, -log of 2 -log of 2/5, माइनस माइनस कट गए, तो log of 2/log of 2/5, तो फिर से ले आओ 2/5 × 2। एम आई राइट? तो ये आया आपके पास 0.4 स्क्वेयर और log ऑफ 0.42। हाँ जी, हाँ या ना? तो ये जो पावर है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, 0.42 log 0.42। ओके, ये 0.4 log 0.42 का स्क्वायर, हमने कहा था ये दोनों सेम।
ये दोनों सेम हो जाए तो आंसर x, ये दोनों सेम होगी तो 2 स्क्वायर, योर आंसर इज। ये सब आप पूछते रहते हैं घुमा फिरा के इधर उधर से, सो दीज आर अ पार्ट ऑफ अ डिस्कशन।